ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Welcome everyone. We are in the month of August. I think the most pious month. इसमें Lord Krishna appeared, and so many devotees of Lord Krishna appeared. We have Kamal Manjari, we have Brijrani, then we have Vinita Uma, Teen. Who else? आपका आने वाला है संडे। And who else? हमने और 5-6 लोग गिने थे ना? हाँ, कृष्णा, प्रभुपाद, yes, most और गोपाल important. कृष्ण Srila गोस्वामी Prabhupada महाराज himself. और महाराज, गुरु महाराज हमारे। Yes, see, Guru Maharaj. Yes, Prabhupada and Guru Maharaj. Just see, the month of August is like loaded with so many वैसे avirbhav. तो राधा रानी का भी 31 को आ रहा है, तो अगस्त। Yes, Radha Rani and Krishna both. And Prabhupada and His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So the month of August is like And loaded Nityanand Prabhu also. नित्यानंद चतुर्थी। Nityanand Trayadashi also. Yes. Balram. बलराम। Not Nityanand, Balram Purnima. बलराम Purnima. Balram. राखी Balram वाले जयंती, रक्षाबंधन वाले दिन। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल मोहिनी सुंदरी। अच्छा, आप बैक टू बैक हम भागवतम के साथ गीता भी। Welcome all of you to our हरे कृष्ण। Hare Krishna Anuradha, Hari Bol, Hemangini Radha. So many Radhas. Yes. Vinti and Sundaris also. So let's quickly do our verse. We are at 13.23. Yes. Okay. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. This verse I find very tough to practically understand on the role of a super soul. So आप में से अगर किसी को ये और simplify करके अगर आप समझा सकते हैं तो इसको जरूर आप please attempt, because it's inconceivable, the role of a Paramatma. How exactly does the Paramatma work? So we'll quickly go through the purport and see if we can practically understand. मतलब हम technically spiritual language में technical words use करके तो बहुत कुछ बोल सकते हैं परमात्मा is this and that, but practically it's very difficult to realize this verse for me. And so whoever can do it much more easily, please help me in explaining. It is stated here that the super soul, who is always with the individual soul, is the representation. Okay, he is not an ordinary living entity. ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि परमात्मा आत्मा के साथ बैठा रहता है. Because the monist philosophers, who is a monist philosopher? Quickly. Mono means one, and monist philosopher means जो everything. जीव और परमात्मा को जो एक वो कर देते हैं. Yes, everything is one. There are no two. सब मोनो मतलब दुनिया गोल है, सब कुछ यहाँ पे एक ही है. मैं तुझ में, तू मुझ में. This is their philosophy. Because the monist philosophers take the knower of the body to be one,
They think there's no difference between Atma and Paramatma, soul and super soul. This is monist. ठीक है? तू ही मैं हूं, मैं ही तू है. Namo Narayan, Namo Narayan. To clarify this, the Lord says that he is represented as the Paramatma in everybody. Lord is clarifying. And he's saying he is different from the Atma. Lord is Para and the individual is Apara. Right? But the super soul is present not as finite enjoyer, nor as one taking part in bodily activities, but as the witness. As the beta 13.23. As the witness, overseer, permitter, and supreme enjoyer. Here is the tough part. His name is Paramatma. He is not Atma. He is transcendental. It is distinctly clear that Atma and Paramatma are different. Super soul, Paramatma, has legs and hands everywhere, but the individual soul does not have hands and legs everywhere. Correct? ये बात समझ में आ रही है? My hands and legs are only with me. They cannot be found outside of my house. Anywhere. Forget outside my house. Outside my room, they cannot be found. But the Lord's hands and legs can be found everywhere. And because the Paramatma is the Supreme Lord, he is present within to sanction the individual soul's desiring material enjoyment. So is he sanctioning everything? This is a point to understand. So when a murderer gets up, I'm going to murder so and so, is the Paramatma sanctioning that murder? तभी तो वो murder हो पा रहा है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा. Right? Without the sanction of the Supreme Soul, the individual soul cannot do anything. But still he has free will. And he can do. The individual is Bhukta or the sustained. And the Lord is Bhokta or the maintainer. Matlab sustained, matlab the individual, the Bhukta, you and me are the maintained. And the Bhokta, the Paramatma, is the maintainer. There are innumerable living entities, and he's staying with all of them as a friend. The fact is that every individual living entity is eternally part and parcel of Krishna, and both of them are very intimately related as friends. But the living entity has a tendency to reject the sanction of the Supreme Lord and act independently in an attempt to dominate nature. And because he has this tendency, he is called the Tatastha energy, the marginal energy of the Lord. The living entity can be situated either in the material or in the spiritual energy. तटस्थ मतलब border पे है. जीव तत्व, you and me, हम border पे हैं. हमारे पास एक free will है, हम material energy की तरफ भी जा सकते हैं, spiritual energy की तरफ भी जा सकते हैं, पराशक्ति की तरफ भी जा सकते हैं, अपराशक्ति की तरफ भी जा सकते हैं. हमारे ऊपर है, इसलिए हम border पे खड़े हैं. We can jump this way or that way. So the living entity can be situated as long as he is conditioned by the material energy. The Supreme Lord, as his friend, stays with him just to get him to return to the spiritual world. मतलब हम तटस्थ एनर्जी हैं. We decided नहीं, मुझे तो material world में जाना. I want to be the bhokta. Okay, and I jump that side. So the Lord also jumps with me into the material world, and then he stays with me. As long as I rot here for millions and trillions of years, he stays with me as the Paramatma, waiting for me to come back. The Lord is always eager to take him back to the spiritual energy, but due to his minute independence, the individual entity is continuously rejecting the association of spiritual light. This misuse of independence is the cause of his material strife. So, जितनी देर वो सड़ रहा है, what's happening to the Paramatma along with the Atma? He's also enduring that because he has to stay with the Atma. He cannot leave the Atma, right? So when he is going to Patal Lok, Sutal Lok, Raurav, all those hellish planets, or like if the soul then takes even all of us, हमने ब्रह्मा की योनि भी ली है और फिर we have taken the yoni of the worm in the stool of a hog. उस समय भी परमात्मा साथ है? Yes, no. Quickly. So, when because of my own degradation and because of my own anarthas, I'm finally the worm
in the stool of a hog, the Paramatma is with me. Yes, Mataji. Just imagine. And yet we say that the Lord is not compassionate. He's not leaving me even there. So he's there with me in that condition. The Lord, therefore, is always giving instructions from within and from without. What is without? क्या मतलब है इसका? जल्दी जल्दी. When Guru, Sadhu, and Shastra, what instructions are given by Guru, Sadhu, and Shastra? Correct. So without means Right. outside. Right. Within means inside. From inside, he is guiding us as the Chaitya Guru, who is the Paramatma. From outside, without, he's guiding us in the form of Guru. International Society of Krishna Consciousness in Guru. our case. क्योंकि हम पहले भी इस्कॉन से पहले भी हम थे, हम सनातन धर्म से ही घिरे हुए थे, हम सबके घरों में लड्डू गोपाल थे, सब कुछ था. Yet we did not know that we were listening, how to listen to the Paramatma in our heart, because there was no guiding light. Sorry, there were guiding lights because our mothers have been very pious, and because of our mothers only we are in this path. But there was no bona fide line of parampara to guide us and bring us. So the Lord, therefore, is always giving instructions from within and without. From without, he gives instructions as stated in Gita, and from within, he tries to convince the jiva that his activities are not conducive to real happiness. Just give it up and turn your faith towards me. Sarv dharmam parityajya mamekam sharanam vraja. Then you will be happy, he says. Thus, the intelligent person who places his faith in the Paramatma begins to advance towards a blissful eternal life of knowledge. Is this clear? Any doubts, any questions, any protest? So then how did we fall in this condition if the Chaitya Guru is always with us? And without his sanction, we cannot do anything. So then what is the role of free will? जैसे पत्ता भी हिलता है तेरी रजा के बिना हिल नहीं सकता. And without his sanctioning, we cannot do anything. So when the murderer is committing murder, he's getting the sanction of the Paramatma, yes or no? Or when we are choosing bad over good and we are making our decisions to join any kind of things and do any kind of, we are getting permission, तभी तो हम वो कर पा रहे हैं. माता जी इस लाइन में फिर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा जो दिख रहा है ये तो purport में, but the living entity has the tendency to reject the sanction of Supreme Lord and act independently in attempt to dominate nature because he has the tendency is called marginal energy. So I think वो जो little हमारी independence है उसका हम misuse करते हैं, तो वो murder करने वाला भी वही, जैसे कि उसके अगर मन में आ रहा है कि मैं यही वाली टेंडेंसी है, तो वो अंदर से आवाज आती भी है कि भाई ये गलत काम है मत करो, फिर वो उसको दबा के अपना इंडिपेंडेंस चलाता है, तो वो सैंक्शन तो मान नहीं रहा. वो जो Okay. छोटी इंडिपेंडेंस दी है उसका मिसयूज आई थिंक वही. तो सैंक्शन भगवान ने जो हमें बिल्कुल रोबोट के जैसा नहीं, वो मतलब कि अंदर से एक बार देयर इज अ कॉल कि ये गलत काम है मत करो, और लेकिन उसके बाद देन आई थिंक वी आर लेफ्ट टू आवर फ्री विल आल्सो. Very good attempt. Thank you so much. Very well explained. There's more to this. Mohini Sundari, do you want to attempt? माता जी अभी सुन रही हूँ मैं, बाद में. आप सुन रहे हो? अच्छा. हाँ नहीं अभी सुन रही हूँ मैं, एक्चुअली मैं हिंदी में पढ़ती हूँ ना, थोड़ा एक बार सुन लूँ. अब क्वेश्चन अच्छा, रिपीट आप हिंदी में पढ़ो. हाँ हाँ ठीक है. So, well, my question is that no action can be committed without the sanction of the Paramatma, right? Right. So, good or bad, unless the Paramatma sanctions, we can't do. It won't happen. Yet, all kinds of sinful activities happen despite the Paramatma sitting in our heart. And this means he is giving sanction somewhere for that to happen. Otherwise, it can't happen only. Right?
ये माता जी हमारी फ्री विल है ना, इसीलिए, क्योंकि जैसे हमें बोले जाते हैं कि 13 विटनेसेस हैं जो हमें देखते हैं, हम कोई भी कार्य अच्छा या बुरा करते हैं तो 13 विटनेस है जो हमें देखते हैं। जैसे संध्या काल हो गया, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और डायरेक्शंस हो गई, डेमीगॉड्स हो गए, और सन, नाइट, मून, संध्या, ये समय सारे, और परमात्मा जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे संध्या समय आया, सुबह का समय आया, वो कुछ पल के लिए समय आता है, लेकिन जो परमात्मा है वो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं और विटनेस करते हैं। तो जैसे हम ये वाला श्लोक पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च, तो जो भगवान है वो हमारे विटनेस करते हैं हमारे कार्यों को। वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कि हमें मना नहीं करते कि तुम ये मत करो, है ना। हम जैसा चाहते हैं, हमारी फ्री विल है, हम वैसा ही कार्य करते हैं। अगर मन कर रहा है मर्डर करने का, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा जैसी वैसा करो। वो उसको भी होने देती हैं, तभी तो हो रहा है संसार में, मर्डर भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसी इच्छा करे। पर लोग जो कर्मा का सिद्धांत है ना, वो भूल जाते हैं कि जो कर्मा का सिद्धांत है वो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए है, कि जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। हम यही भगवत गीता में भगवान हमें बाह्य रूप से समझाते हैं, और अंदर रूप से चैत्य गुरु के रूप में भी हमें कई बार हमारे मन में बुरा विचार, कहते हैं 2 सेकंड के लिए बुरा विचार आता है, लेकिन अगर वो 2 सेकंड निकल जाए, सपोज किसी को सुसाइड करना है, वो 2 सेकंड का विचार है, अगर वो 2 सेकंड वो किसी तरह क्रॉस कर जाए और अपनी विवेक को यूज करे, जो कि एक मनुष्य में है, तो वो बच सकता है उससे, है ना। तो भगवान विटनेस के रूप में दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन नेगेटिव ही है और हम लॉ लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझते और नेगेटिव ही चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान उसको भी सैंक्शन करते हैं। क्योंकि हमारे, वो कहते हैं जैसा तुम करना वैसे करो। जैसे अर्जुन को पूरी भगवत गीता पढ़ा बोलने के बाद भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारी यथाइच्छा से इच्छा, यथाइच्छा से तथा। हाँ, जैसे ही तुम्हारी इच्छा वैसे ही करो। तो इतना बड़े ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन के ऊपर उन्होंने थोपा नहीं कि तुम जो मैं कह रहा हूँ वो ही करो, उन्होंने बोला तुम्हारी इच्छा जैसी वैसे करो। तो हमारे अंदर से भी अच्छे बुरे विचार हमेशा आते हैं। अगर हम किसी का मन दुखाते हैं तो हमारे मन में आता है, हम तभी जाके सॉरी कहते हैं, है ना। और अगर हमें लगता है हम सही हैं तो हम अटकते भी हैं, है ना। तो भगवान हमारे सारे कार्यों को 13 विटनेस प्लस भगवान देख रहे हैं। अगर हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम बुरे कार्य करने से बच सकते हैं। और अगर नहीं बनाते हैं तो और ये जो नियम है वो भगवान ने ही बनाए हैं, अगर हम ये बात को समझते हैं तो हम बुरे कार्य भी नहीं करेंगे। देखो हमारे बुरे कर्मों की वजह से, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि स्टूल में भी भगवान को उस कंडीशन में स्टूल में भी वॉर्म्स होते हैं, और वहां पे भी आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं, है ना। जीव अगर वहां पे है तो आत्मा के साथ परमात्मा वहां भी है। तो भगवान के लिए कोई अच्छी बुरी चीज नहीं है, वो हमारे उस कंडीशन में भी हमारे साथ में। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर ही परमात्मा है, एनिमल्स के अंदर भी है, वॉर्म्स के अंदर भी है, सोल है, सुपर सोल वहां भी है। तो किस किस कंडीशन में हम, भगवान हमारे सहयोग करते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं अगर हम उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। जैसे वो श्लोक में भी आया ना कि 2 पक्षी एक डाल पे बैठे हैं, और भगवान तो विटनेस की तरह देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी तरफ मुड़ के देखते ही नहीं, इतना कुछ पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से हमारे हृदय क्लियर होता है। Jai, thank you so much. Very, very nicely explained. बस And हिंदी हो जाती है माता जी। हिंदी में आपने बहुत अच्छा समझाया, और विंती ने इसी बात को इंग्लिश में समझाया. She read the purport. It was exactly the same thing. So the conclusion that I'm making from both what Vinti and Moini Sundri has said is that nothing can happen without the sanction of the Lord. Yet, when we perform sinful activities, this means that the Paramatma and the Super Soul sanctions the free will of the Jiva. And the free will, therefore, is more, creates more havoc than the good instruction of the Lord. अभी तो इतनी सी फ्री विल है, उससे इतना उत्पात है. कहीं पे कहीं 5% अगर हो जाती, अभी तो 0.001% है, कहीं 1% हमें फ्री विल मिल जाती तो क्या हालत होता, जस्ट इमेजिन.
So despite the Lord, the Paramatma, sitting with us and sanctioning, he is yet, according to his own rule, is bound to sanction our free will and all the anarthas that we commit with that free will. He does not like it. So every minute, the Paramatma is also being tortured. That's the kind of dukh and taklif we are causing him. लाइक माता जी, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो जैसे बच्चों को हम बहुत कुछ समझाते हैं, बच्चे फॉलो नहीं करते, लेकिन एक टाइम के बाद हम भी परेशान होके हाँ कर देते हैं कि ठीक है, जैसा आपको करना है करो, लेकिन हम अंदर से दुखी हो रहते हैं। अगर हमारा बच्चा Yes. स्मोक कर रहा है या क्लब जा रहा है, लेट आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको ओके करना पड़ता है, उनका साथ देना पड़ता है। जैसे परमात्मा हमारा साथ दे रहा है, ऐसे हमें अपने बच्चों के साथ देना पड़ता है ना। Absolutely. But Paramatma dukhi hai. हाँ, हम भी जैसे दुखी होते हैं बच्चे। Yes. And therefore we don't have entry into Golok. उत्पातैव, because हम वहां पे खूब उत्पात मचाएंगे, because हमारी फ्री विल हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ये इतना सारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 16 माला का जप, अंडर द इंस्ट्रक्शंस, अंडर ओबीडियंट टू गुरु, साधु एंड शास्त्र, पूरी लाइफ की तपस्या, कंट्रोलिंग योर सेंसेस सो दैट वी कैन रिफाइन दैट फ्री विल। और उस, बिकॉज ये फ्री विल हमसे कभी भी नहीं छिनेगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये फ्री विल रहेगी। तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर ये इतना उत्पात मचा रही है, तो इमेजिन हाउ मच डिस्टर्बेंस इट कैन क्रिएट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड and all the other people whose free will is completely in tune with the free will of the Supreme Lord. Tuning है, right? तो अगर तो उनके साथ आपकी फ्री विल मिल गई है, you have passage to Golok. Simple as that. लेकिन आपकी फ्री विल और उनकी फ्री विल में अगर ट्यूनिंग नहीं है, then you will be sent here to make that adjustment, to make that link, and then you can come. Like we always say कि कर तो रहे हैं सब कुछ, अभी भी हमें गोलोक मिलेगा या नहीं मिलेगा? It's so tough. Why we are not being allowed? It's not fair. We are not seeing how much disturbance we are causing in the world with our free will. हम ये recognize नहीं कर पा रहे हैं actually. But free will, let free is a cause, is like a nuclear missile left unattended. It's a nuclear missile. वो पृथ्वी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और उसको बंजर भी बना देगा कि अगली पीढ़ियां भी वहां पे जी न सके. That's what is the meaning of nuclear, isn't it? It is worse than bloodshed and cutting everyone. इतना हैवक है फ्री विल का. फ्री विल इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड मिसयूज ऑफ दैट फ्री विल जो हम हर क्षण कर रहे हैं. डज दैट मेक सेंस? यस। और भगवान कितने कृपालु हैं जो हमारे को वापस ले जाने के लिए हमारी हर योनि में हमारे साथ जाते हैं. Yes. He is waiting for our free will to connect with his free will, to coordinate with his free will. He is waiting. And tab tak he is, like I was hearing Guru Maharaj's lecture on Janmashtami, Gop Kumar भागवत बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की स्टोरी सबने सुनी होगी. गोप कुमार from Golok fell down to this material world, and the Lord came to him in many forms as a guru, in many lifetimes, to bring him back. And then in this, the last lifetime, he himself came in the form of a guru, standing under a tree in Vrindavan. And when Gop Kumar came there, he gave him a mantra. He chant this mantra. He just said this, chant this mantra. And Gop Kumar ने उस मंत्र को इतना sincerely और इतने effort से chant किया that just by on the strength of that mantra in this material body, he was able to go to all the planetary systems. मतलब he was able to pierce the Brahmajyoti covering, go to Vaikuntha planets, and he even went all the way till Golok.
The Vaikunt planets tak isi only on the strength of the mantra. Yet, unka man nahi laga Vaikunt mein and he came back down. That's a long story, but ultimately when he did go into Golok, and he saw that he saw some village people there, and they said that he asked him, where is Krishna? I want to meet him. And he said, वो इस डायरेक्शन में गए हैं अपने ग्वालों के साथ, वापस आ ही रहे होंगे, गोधूली का टाइम है, सो जिस डायरेक्शन में आपको धूल उड़ती हुई दिखे समझ लेना कि कृष्णा उस डायरेक्शन से आ रहे हैं. एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स दैट पाथ. और इन द डिस्टेंस ही कुड सी अ बिग क्लाउड ऑफ डस्ट. हम गोलोक की बात कर रहे हैं बाय द वे. एंड इन दैट क्लाउड ऑफ डस्ट he could see anything. He thought कि क्या गाय यहाँ से आ रही है, क्या कृष्णा यहाँ से आ रहे हैं. And indeed, all those 9 lakh cows were coming back with so many gopals, just the cowherd boys. And one blue figure from amongst that Dhundali, Godhuli, comes running towards Gop Kumar. And when he sees Gop Kumar, he faints and falls. The blue figure faints and falls. And Gop Kumar also faints and falls. And then all the cowherd boys, they throw water and the cow, they milk the cow quickly. और दूध लेकर ही उनको छिड़क रहे हैं उनके ऊपर के उससे उड़ जाएंगे, क्योंकि आसपास जो भी पानी उनके पास नहीं मिला. और फिर दोनों के दोनों मिट्टी में लथपथ उठे, एक दूसरे को देखा. And then what does Krishna do? He starts kissing Gop Kumar. All over he starts kissing him. That, oh my God, look, he finally came back. Look, he finally came back. He left us. He left us and he finally came back. This is the condition of Krishna, what I'm trying to explain. This is the condition of Krishna suffering for so many ages. Just a minute. Can you hear me? Yes. Okay, one. And then he says, Krishna says, he tells all the Gokumars that, look, so this means from Golok also, this havoc of the free will can make you fall. And then do you know the identity of Gop Kumar? Gop Kumar was Radharani's younger brother. The younger brother of Radharani fell from Golok because of this free will. हम तो क्या चीज है फिर. Exactly. Yes. Exactly. And the amount of trouble caused to Krishna. But it's vividly described that Krishna was crying profusely. मूर्छित होके गिरते थे, फिर उठते थे, फिर मूर्छित होके गिरते थे, फिर उठते थे. This is the amount of agony we are causing the Lord. Okay. Mataji, I have one question. Can I ask now? Mataji, how we can understand the difference between the free will? अभी जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, whether it is our free will or it is Krishna's will, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपके मन में जो भावना आ रही है, अगर आप उस भावना को नजरअंदाज करके गुरु साधु और शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस की तरफ फॉलो करते हो, डिसीजन लेते हो, दैट्स taming your free will. Like you got up in the morning और आपका अलार्म बजा, आप नहीं उठे, फिर आपका दूसरा अलार्म बजा, आप नहीं उठे, फिर तीसरे अलार्म पे you got up and you told yourself that, look, I'm supposed to do this because my Guru Maharaj has given me this instruction. My mind is telling me go back to sleep. Look, you had a late night yesterday. Your leg is paining, this and that. But उस आवाज को आप अगर दबाकर उठने की कोशिश करते हो, नहीं भी अगर उठ पाते, लेकिन उठने की अगर आप कोशिश कर रहे हो,
और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, दिस मीन्स यू वन ओवर योर फ्री विल. योर फ्री विल वाज टेलिंग यू गो टू स्लीप because you're not well, you had a late night, you didn't get enough sleep. But because the whatever instructions you have been hearing from Guru, Sadhu and Shastra, that tape was also playing in your mind. And you chose from the two, the latter. लेकिन ये माता जी द्वंद्व जो है वो अभी जैसे हम वी आर इन दिस पाथ, ऑन दिस पाथ, फिर भी हम स्ट्रगल ही करते हैं, बट ये द्वंद्व हमेशा ही चलता रहेगा. Yes. It will be always there. Yes, 24 hours, 365 days. We are going to have this constant fight of taming the mind and taming the mind. थक जाते हैं कई बार तो. तो फ्री विल माइन्यूट कहाँ हो गई? इट हैज ऑक्यूपाइड अ फुल ऑफ आवर लाइफ माता जी. तो फ्री विल ने तो हमें पूरा घेर के रखा हुआ है. तो ये इट इज, आई यू अंडरस्टैंड नो व्हाट आई मीन टू से, Yes. ये माइन्यूट तो नहीं हो सकती क्योंकि देयर इज नो चॉइस कि अभी इतने के लिए हमें ये कोशिश करनी होगी, ऐसे नहीं. इट इज होल डे, 365 डेज, ऑल द इयर्स यू हैव दिस बॉडी. जब तक है तब तक ये तो काम करती ही रहेगी फ्री विल अपना. So Prabhupada says that he's giving us the assurance that if you follow the devotional program that I have given you, of following the 4 regulative principles, chanting 16 rounds, following the morning program, you will be able to tame this mind. And service under Guru, Sadhu and Shastra, you will be able to tame this mind in a very short time. कितना short time? जैसे वो example देते हैं कि it's a vast Atlantic Ocean and you are in a small, not even a boat, you are in a पत्ता. एक पत्ते के ऊपर हो आप, है ना? What chance do we have of crossing the ocean? Forget crossing the ocean. तो that whole ocean will reduce into the hoof print of a बछड़ा. गाय भी नहीं, गाय का जो बछड़ा है वो जब गीली मिट्टी में अपना पैर रखे तो वहां जो खड्डा हो जाता है, उसके अंदर जो पानी भर जाता है, उतने पानी, वो पूरा जो सागर है वो उतने पानी में श्रिंक हो जाएगा. फिर आप जिस पत्ते पे बैठे हो वो उसके लिए बहुत बड़ा है. यू कैन क्रॉस ओवर इवन इफ यू आर बेबी क्रॉलिंग. एंड बिलीव मी, वी आर ऑल बेबीज. हमारी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही है. हम चाहे 50 के हो जाए, 60 के हो जाए, 70 के हो जाए, वी आर actually struggling and crawling like a baby only in devotional life. So even if you're a baby, you will not drown. That's the assurance. And this process is foolproof. Rup Goswami is saying that in Upadeshamrit. That if you follow this, then he gives time limits. You know, you will get this result. You will reach 9 steps. उन्होंने क्यों बताए हैं? आदौ श्रद्धा, तथा साधु संगा, then anarth nivritti, nishtha, ruchi, asakti, bhav and prem. These are the steps that you cross ultimately. And you will go through these processes. Automatically, it will happen. That process only will take you. So we just have to follow the process. इतना दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं. Just follow the process. Because you need उत्साह, निश्चय, धैर्य. उसके बगैर हम कर नहीं पाएंगे. So you cannot give up hope and you cannot do anything that's going to damage your utsaha. You need these 3 things, these 3 ingredients. And therefore you cannot beat yourself down. कि ये तो possible ही नहीं है, ये हो नहीं सकता. Because the Shastra is giving us assurance, the Acharyas are giving us assurance, and वो करके भी दिखा रहे हैं. And you can see this. Follow a Madhyam Adhikari. You can see this from his life. And that is enough assurance. Always have a Madhyam Adhikari guide or mentor. ठीक है? Because from this I remember one little story that Bharat Maharaj, he fall down from the stage of bhav when he was in a forest. वो एक पेड़ के मतलब इसमें बंद गए. तो if there was, जैसे आप कह रहे हैं मध्यम अधिकारी, कोई होता अगर उन्हें रोकने के लिए वहीं पर, तो शायद क्या गलती की थी उन्होंने, क्या सीखा, ये बता रहे हैं ना. प्रभुपाद गिव्स क्या शिक्षा है भरत महाराज से. व्हाट इज द लर्निंग? अकेले अपने दम पे नहीं करना चाहिए. Yes, he made the mistake of going to the forest alone. He should have gone to a sadhu sangha. Or he should have stayed in the association of Vaishnavas, because we are sure to fall. But the Vaishnav Sangha protects us.
Then you will not fall. And therefore he got attached to the deer. अगर वैष्णव संगा में होते, the Vaishnavas would have noticed and they would have guided him. Look, you're getting attached. उनको पता नहीं चल रहा था, लेकिन कोई होता वो देख के बता देता कि you are getting attached, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो तुम ये छोड़ दो और तुम मोड़ आओ. इसलिए हमें कोई चाहिए बताने के लिए, which is Vaishnav Sangha. है ना? We'll do one more. Okay. य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते. Wants to read the translation? Oh, YG is here. Yes, Anu. Mataji, may I read? Yes, please. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. Here is the assurance given by Krishna. Huh? In very clear words. Na sa bhuyo bhijayate. Na saha. Na means never. Saha, he. Bhuyaha, again. Abhijayate, takes his birth. Clear understanding of material nature, the super soul and the individual soul and their interrelation makes one eligible to become liberated. केवल ये understanding ही कि ये तीन हैं, यही नहीं पता है दुनिया को कि ये तीन तत्व हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं. The आत्मा, the परमात्मा and the prakriti. They become eligible and they turn to the spiritual atmosphere without being forced to return to this material world. This is the result of knowledge. Without being forced to return to this material nature. What do you understand by that? Who's going to force? फिर से पढ़ सकते हैं आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी. Clear understanding of material nature, the super soul, the individual soul, and their interrelation makes one eligible to become liberated and turn to the spiritual atmosphere without being forced to return to this material nature. This is the result of knowledge. Our free will only when goes in wrong direction and we फिर हम माया के संग कर लेते हैं, प्रकृति का संग जो कर लेते हैं अपनी free will के चक्कर में. Yes. Enjoy independently करने के चक्कर. Right. Being forced by free will, being forced by prakriti, being forced by the law of nature. The rules that Krishna has designed to run this world. जेल चलाने के जो rules fix किए हुए हैं, everything is going to run according to those rules. You cannot bypass those rules. Unless Vasudev Krishna himself comes, he can break all rules and he keeps on breaking them. The Yuddha of Kurukshetra is testimony to that. He took so many vows कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. He broke all those rules. You know? Why? To protect his devotees. For the sake of his devotees, he does not care for his reputation. Krishna does not care for his reputation. Hence, he broke all those rules because to him, his devotees are more dear than his reputation. That's the kind of a deal he makes with his disciples, with his devotees. That I'm not going to care about what vows I take or, what's going to happen to my reputation or what's going to happen to me. But you are my most biggest concern and I'm going to protect you. कितनी बड़ी assurance है ये. The purpose of knowledge is to understand distinctly that the living entity has by chance fallen into this material existence. By his personal endeavor, in association with authorities, saintly persons, and a spiritual master, he has to understand his position and then revert to spiritual consciousness by understanding Gita as it is explained by Krishna. So, by his personal endeavor and in association with authorities, saintly persons, matlab same, Guru, Sadhu and Shastra. But that endeavor is required. And here is what Krishna sanctions.
This is what he sanctions. He is waiting for us to put that effort. That Krishna does not touch. और ये free will इसीलिए भी देनी जरूरी है. बहुत बार disciples ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद, why did he even make a free will? देते ही नहीं ना free will. सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सब हम वहीं रहते. What is the answer to that? What is the answer to that? जो अभी तक आंसर सुना है वही यही है कि वो रोबोट्स वाला फिर हो जाता है अगर हमारा कंट्रोल. Yes, very good, Vinti. You really understood Krishna consciousness well. This kind of an understanding or this kind of love or attraction to Krishna would be forced. And whatever is forced is not love. And this is his expectation, that unconditionally you give your support and your allegiance and your love to me. Not support, give your love to me. Because as Vaishnav Maharaj says, Krishna के पास सब कुछ है, हम क्या दे सकते हैं? Can we give anything to Krishna? But still, he does not have one thing. What is that? भक्ति. उसका प्रेम. भाव, प्रेम. Yes. Maharaj said, he does not have our mind. He does not have our heart. सब कुछ है. वो हमें ऐसे उठा के छीन के ला भी सकते हैं. But our heart will not be there with him. That he is craving for. The Raja Dhiraj, Trikpal, he has everything, but he does not have a how. Just imagine how much pain it must be causing him because of us. कि हमने स्वेच्छा से अपना प्रेम उन्हें नहीं दिया है. For that he has given free will. इसीलिए free will जरूरी है कि हम स्वेच्छा से उसको यूज करके डवटेल करके उनके पास लाए. और इसके लिए is prepared to wait and he is waiting. This is the greatness of the Supreme Personality of God. लोग बहुत casually बोलते हैं God is great, God is great. Prabhupada said, you have to understand how great he really is. Then you will start feeling some affection for him. Otherwise you just say, oh, मुझे parking मिल गई, God is great. मेरी flight crash नहीं हुई. Last minute I cancelled my booking. God is great. These are very petty greatness. What attachment will you have for such a God? This means the next time you don't get parking, God is not great. The next time मेरा नुकसान हो गया, जहाज डूब गया, business डूब गया, God is not great. You should know how great he really is. He is tolerating sitting as a Paramatma in your heart without having your love and affection. He's tolerating that and yet sitting with you, not leaving you. Tolerating our prostitution mind. कि बगल में बैठे हैं स्वामी and we are going with all the other swamis, all the other boyfriends in our life. We are going with them. He is tolerating that. और इससे ज्यादा क्या बड़ी करुणा चाहिए हमें भगवान की? चैतन्य चरितामृत में वो कहते हैं, he says that मेरे अलावा अगर आप किसी भी चीज में रुचि रख रहे हो, that's prostitution. That's the exact word used. And he's tolerating. वो छोड़ के ही नहीं जा रहे. He's sitting there waiting कि ये free will से जब मेरे पास आएगा, I will still accept him. I will still accept him. 1 करोड़ बॉयफ्रेंड के बाद भी अगर ये आते हैं, trillions and billions के बाद भी I will still accept him. This is the greatness of the Lord. God is great. Even in the yoni of a stool, he is with me. He is not leaving me. He is not leaving me. He's waiting. He has not given up on me. When everybody else gives up on me, he is not giving up on me. This is the meaning of God is great. Then you start having some affection for him. है ना फर्क? That's the difference. Okay, one more we will do. ध्यानेनात्मनि पश्यति केचित् आत्मनाम् आत्मना अन्ये सख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. Who wants to read? May I? Anyone? May I? Yes, sure. Jai Srila Prabhupada, translation by Prabhupada and purport by Prabhupada. Some
perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. The Lord informs Arjun that the conditioned soul can be divided into two classes as far as man's search is concerned. जो एथीस्ट हैं, नास्तिक, एग्नोस्टिक एंड स्केप्टिक्स, ये तीनों अलग अलग वेराइटीज हैं, आर बियॉन्ड द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो इस बॉडी में ही घिरे हुए हैं, बॉडी से रिलेटेड ही वो हर तरह के चीजें रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. But there are others who are faithful in their understanding of spiritual life, and they are called introspective devotees, philosophers, and workers who have renounced fruitive results. Those who always try to establish the doctrine of monism are also counted among the atheists and agnostics. Please underline this word, because I have realized after speaking to devotees that I don't think they still understand what's Mayavad. And I don't think they still understand the danger and the what is the word? Destruction caused by Mayavad philosophy. Mayavad philosophy is like launching a nuclear missile कि उस हृदय की जमीन को इतना बंजर बना देता है कि वहां पे अब आप जितना मर्जी प्रेम और उनको अफेक्शन दे दो, वहां कभी कुछ उग ही नहीं पाएगा. इतना वो हृदय की खेती को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. So it is more dangerous. Mayavad is more dangerous than atheism. So, what is the word? Those who always try to establish the doctrine of monism are also counted among the atheists and the agnostics. In other words, only the devotees are best situated in spiritual understanding, because they understand that beyond this material nature is a spiritual world, and there is Krishna, who is expanding as Paramatma in everyone, the all-pervading. Of course, there are those who try to understand the Supreme by cultivation of knowledge, and they can be counted in the class of faithful. तो ज्ञान योगीज को भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धावान जन में आ रहे हैं, वो भक्तों में नहीं आ रहे हैं. It's very important to understand these distinctions. वो श्रद्धावान जन है, which is good. मतलब वहां पे खेती हो सकती है, वहां पे भक्ति योग की खेती हो सकती है, बीज डाल सकते हो आप. Then the Sankhya philosophers analyze this material world into 24 elements, and they place the individual soul as the 25th item. When they are able to understand the nature of the jiva to be transcendental, then they are able to understand also that above the individual soul there is God. Otherwise, वो ये सोचते हैं सांख्य philosophers कि सृष्टि 24 तत्वों की बनी है और 25वां तत्व जो है वो है ये soul. इसका मतलब वो जो 24 material ingredients है, this 25th is also a part of that material ingredient only, which is totally wrong. Because this जीव तत्व is spiritual. वो इन 24 elements का बना ही नहीं है, बॉडी बनी हुई है. 24 तत्वों की जीव थोड़ी बना है उसका. इसीलिए वो भगवान को they are not able to understand कि इस आत्मा के ऊपर एक परमात्मा भी हो सकता है. इसीलिए सांख्य philosophy is also बंजर जमीन. सो 24 एलिमेंट्स पृथ्वी के, 25वां एलिमेंट आत्मा, 26वां एलिमेंट क्या हुआ? परमात्मा. Those who work without fruitive results are also perfect in their attitude. What is this? Those who work without fruitive results? These are the yogis. हमने अभी ज्ञानी की बात की, कर्मियों की बात की, ज्ञानी की बात की, योगी. योगी भी फर्टाइल है, उनके हृदय की जमीन भी जो है बंजर नहीं है, वहां पे भी हम खेती कर सकते हैं भक्ति योग की. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने रिनाउंस कर दिया कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए. अगर वो ध्यान में है, मेडिटेशन में है, तो वो इसके बदले में कुछ चाह नहीं रहे. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड इन रिटर्न. एटलीस्ट दे हैव रीच्ड टिल दैट स्टेज, सो दे विल आल्सो बी कंसिडर्ड श्रद्धावान. बट हम इनको भक्त में नहीं गिन रहे हैं. जस्ट इमेजिन द पोजीशन ऑफ अ भक्ता. हम उन योगियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को भक्तों में नहीं गिन रहे हैं. भक्ति योग इज इवन हायर. They are given a chance to advance to the platform of bhakti in Krishna. उन्हें चांस मिलता है.
मतलब it's like giving them a VIP pass to enter जन्माष्टमी कि अच्छा ठीक है आ जाओ. Are you getting it? लेकिन जो डिवोटीज है वो ऑलरेडी अंदर है. भक्तों को तो फ्री पास है, तुम आ जाओ जन्माष्टमी में सेवा द्वार से अंदर, कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा. लेकिन जो ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, दे लुक वेरी डेकोरेटेड. समाज में अगर आप देखो, समाज के स्टैंडर्ड से योगीज का कितना वैल्यू है. ओ माय गॉड, ही कैन क्रिएट, he has this siddhi, he has that siddhi. People are in awe and reverence. But in bhakti योग उनकी इतनी वैल्यू नहीं है. मटीरियल वर्ल्ड में उनकी बहुत वैल्यू है, बट उनको फिर भी पास दिया जा रहा है. अच्छा आ जाओ, आप आ जाना, एंट्री करा देंगे हम आपकी. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness, who try to find out the super soul by meditation, and when they discover the super soul within themselves, then they become transcendent. मतलब इतनी योग जप तप करने के बाद एक परमात्मा का फाइनली उन्हें दर्शन हो जाता है अंदर. ओ परमात्मा है. After years and years of tapasya, they finally are able to understand कि परमात्मा एक है आत्मा के साथ बैठा हुआ. केवल दर्शन हो रहे हैं, अभी उनके साथ अटैचमेंट शुरू नहीं हुई है, केवल दर्शन हुए हैं. That's the visa to enter. So that's why they are saying bhakti yoga is higher, that you don't have to, इतना जप तप करने के बाद भी आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं. So why not do bhakti yoga directly? Similarly, there are others who also try to understand the Supreme Soul by cultivation of knowledge. And there are others who cultivate the Hatha Yoga system, who try to satisfy by childish activities. Just see Prabhupada's genius. Hatha Yoga, agar aap dekhen, I have some, मैं गई थी, I had the somebody invited me to some Hatha Yoga session. But because of this precious Granth, Bhagavad Gita as it is, and the understanding that Prabhupada has given us, every time we are invited to any kind of Guru, Baba, Sangha, you are able to understand and see through it on the basis of this knowledge. And really, they seem childish. They really seem childish because of this knowledge that we have got. And because of this understanding how Bhakti Yoga is much, much more superior than any of these gymnastics, as Prabhupada calls it. Hatha Yoga is tough. And there are people who have achieved it. They can do so many things. Siddhiyan mil jati hain. Siddhiyan are like byproduct of Bhakti Yoga. वो तो आपको भक्ति योग में भी वैसे ही मिल जाएंगी. So these things look very attractive in the material world, but they are not helping you develop a relation with Krishna. That's the nutshell of this. In fact, if you're not careful, they may make you proud. हिरण्यकशिपु था, रावण थे, हिरण्याक्ष था. मतलब हिरण्यकशिपु was almost invincible. 14 भुवन के लोग उसके पैर के नीचे. वो सुबह सूर्य को बोलता था, अभी मत उगना, मेरा मूड नहीं है उठने का, तो सूर्य थम जाता था. चंद्रमा को कहता था आज रात तू नहीं निकलेगा, मेरा मूड नहीं है, वो थम जाता था. इंद्र को कहता था अपना सिंहासन भेज दे आज, वो जी सिंहासन आ जाता था. He was controlling everything. Vayu, Hava, fire, Agni, he was controlling everything. This is Hatha Yoga. But the 5-year-old Prahlad, he could not kill. इतना बलशाली. कौन सी ऐसी आर्मर था या ऐसा वेपन था जो उसके पास नहीं होगा. सारे ग्रह उसके कंट्रोल में, but he could not kill 5-year-old child. That's the power of bhakti. तो उसके आगे हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, all these yogs are very, very fika. That's what Krishna is saying. That there is no need, but he will not take birth again if you just understand that you are the Jiva, Jivera Swarup hoy, Nityera Krishna Das. This understanding comes only and only in Bhakti Yoga. Otherwise, you can become proud. And you will again fall down. Imagine even in Bhakti Yoga,
up till the stage of bhav. Bhav is the second last stage, 8th stage. उसके बाद next stage क्या है? प्रेम. वहां से भी कर सकते हो. So we should always be very, very careful about our protection. Yes, Anuradha. Always stay in sadhu sangha. Mataji, I have a question. What is Hatha Yoga? It's a kind of yoga where you align all your 6 chakras in the body by many kinds of yogic postures and asanas. There are many such yoga gurus who have achieved कुंडलिनी अवेकन कर लेते हो. बट ये सारे जिम्नास्टिक्स करने के बाद प्रभुपाद कहते हैं, ही इज राइटिंग, नो, they try to satisfy Krishna by childish activities. Krishna says, what? I mean, it's like a child coming to Krishna and saying, look, I can stand on my head, मैं शीर्षासन कर सकता हूँ. You know, I can create bhabhuti from the air. Krishna is like, what does that mean to me? Do you love me? Show me your heart. प्रेम है मेरे लिए? नहीं, वो नहीं है. But I can show you, I have achieved this. I can control my breath underwater for 10 years. I breathe only once in 100 years. I've been able to elongate my life. I'm 500 years old today. Krishna says, okay, मैं तो आदि पुरुष हूँ, but show me your heart. Do you have anything for me? मेरे लिए कुछ है? नहीं, वो नहीं है. Are you getting my point? तो ये material world के point of view से तो बहुत attractive लगते हैं. It's nothing for devotees point of view, जो उनके अपने inner circle में बैठे हुए हैं. Does it make sense? Yes, Mataji. Very heart to heart. More conviction आ गया today after your this 2-3 verses जो आपने अभी लिए ना, उससे और conviction आ गया for this complete surrender towards Krishna's lotus feet. क्या होना चाहिए? Thank you so much. Yeah, and we just have to struggle. We don't even have to give perfection. Nobody is saying that Mangal Aarti 10 on 10 होना चाहिए, 100 on 100, 365 over 365 days. वहाँ कोई चार्ट लेके बैठेगा, ये कितनी बार आया मंगल आरती में, टिक टिक करेंगे. No, they are only going to see your struggle. How much you struggled sincerely to do what your acharyas are telling you. Nobody is seeing how well you are doing it. So don't even be disheartened by what you can't do. Don't be disheartened. Never, never, never do anything that is going to break your उत्साह, निश्चयात एंड धैर्य. इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखो. और जहां भी आपको लग रहा है कि ये डैमेज हो रहे हैं, सीक गाइडेंस, सीक, गो टू अ काउंसलर. ही विल हेल्प यू. है ना? क्योंकि बिना उत्साह के आप कुछ नहीं कर सकते. And he's just waiting for you. So we just have to struggle for Krishna. That's all. It's easy. Just have to struggle. वैसे भी तो struggle कर रहे हैं material world में. कहाँ यहाँ पे हम बड़े आराम से चल रहे हैं. तो ये struggle ना कर, ये वाली struggle कर लो. At least यहाँ पे तो you're getting something great in return. You're going to be saved from death forever. Okay? Hari Bol. Thank you so much for your kind attention and attendance. Yes, आपने कुछ कहना है विनती? Yes, thank you, Mataji, for today's wonderful class, wonderful discussion. Yes, Mataji, it was so nice. Thank you, Mataji. Jai And Shri I Ram. realize now Anuradha heart to heart. Anuradha Mataji will wish. मैं recording बंद कर देती हूँ.